Give me a second, okay, students. Okay, YouTube students, good evening. Welcome to today's class. Nice. Okay. Nice. So, students, how are you all? I just came running from another class. So, sorry for the delay, okay? Sorry for the delay. Now, quickly, let's do one thing. Let's quickly go to the... Yes, good evening, Rutuja. Good evening, Davangere, Class B students. Let us quickly go to the technical poll. Please let me know, is my audio, is my video perfectly clear and perfectly visible or not? Please, students, everyone has to answer the technical check. Please let me know. And YouTube students, please type in the chat whether I am audible or is my screen visible, is it perfectly visible or not? Aniket, hello, hi, good evening, how are you? Yes, very good. Everyone has to answer. Abhay, welcome to today's class. I'm good. Okay, Bhavana, nice. So yeah, everyone who is joining with a thumbs up or with a say hello, hi, you can talk with me. Praveen, Ranjit, Pragati, good evening. Sweetie, good evening. Sweetie, आज बात ही नहीं करी है, क्या हुआ? Krishna, Vaishnavi, good evening. Okay, so everyone answered the technical check. Please let me know, is my audio, is my video, everything is visible or not? Good evening. Good evening, sweetie. Yes. Nice. All is good. Okay. Yes. Dipali, good evening. How are you? So I'll be waiting just one more minute so that everyone answered the technical check. Okay. Okay, students, please, everyone has to answer it. Okay, Shweta, good evening. Nice, Praveen, good evening. Shraddha, good evening. How are you all? And are you? Most of you are from different states, or most of you are from, let's say, Karnataka itself? Let me know. Where are you from? Like each individual can say they are from. Where are they from? Krishna, hello. Yes. Okay. Good. So yeah. So as I can see, there is no issues. Okay, Rutuja, thank you. Huh. I'll say everything. Every information is there today. Okay, don't worry. Nah, Bhavana. Okay, Maharashtra, Shraddha, nice. I don't know. You can teach me a word to say good evening in Marathi. That would be nice. Okay, I'm ending the poll, students. Thank you for answering. As I can see, most of you have answered it. Yes. Now, coming to today's session. Okay, let me introduce myself. Okay, myself Samanvit. I'm your physics faculty. Okay, Shubha Sadhyakal. Good evening. Okay. Okay, sweetie. Nice. So, welcome to today's class. Myself, Samanvit, your physics faculty from Avantifellows. Yes. Acha, path. Okay. Yes. So, Shubha Sanjay. Yes. Shubha Sanjay would be in Kannada. Okay. It's the same meaning. It's good evening. Okay. It's good evening. Okay, no problem. Nice. Now, students, in today's class, what we are going to talk about? First thing is, I'll give information of JEE examination. Okay. Based on 2022 notification also. Okay, Bhavana, Shubhasa. Okay. Based on 2022, we'll be talking about it. Okay. What are the information that is given? What is exam pattern? Everything we'll talk. Okay. In JEE. And in some other session, I'll be talking about NEET too. Don't worry. I'll be talking about NEET too. But today we'll be focusing on JEE. Then after that, I'll give you the information. Okay. Before this, there is the information about which group to join, which Telegram group to join. Okay. I'll give you the link. Please take a screenshot or please write it down. Okay. Whatever you want to. Okay. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot, or if you want to write it down, it's a tiny URL. Okay. Then also I'll give the information about the drive link. Okay. Then we are going to talk about quick recall, what we studied in yesterday's class. Then numericals on equilibrium. There was one problem that was left. Numerical was left due to yesterday's technical error. We couldn't complete. Yes, Abhay. Yes. And we'll be talking about something called conservation of energy. Students, please let me know, have you seen this formula? Kinetic energy, initial plus
potential energy initial is equal to kinetic energy initial plus potential energy, sorry, final plus potential energy final. Have you gone through this formula? Have you seen through this formula? Please let me know. JNV students, Bagalkot, Ballari, Chitradurga students, please let me know. Tumkur students, Uttarakhand students to join. Yes. Yes or no, students? Have you at least seen it? Okay, nice. Okay. Don't worry. If you haven't seen it, we'll be talking about this today. Okay, Bhora, no problem. Okay, we'll be, see, this is basically what conservation of energy means, or it is called conservation of mechanical energy. Okay, mechanical energy. We'll be talking about it. Don't worry. Then we'll be solving certain numericals on conservation of energy. Then the summary of this session. Okay. Now, talking about, okay, before quick recall, it's basically links of everything. Okay, links of everything. Students, here is the link of physics notes. Let's say every day's notes will be uploaded on this link. Okay, here you will be getting what? Avanti physics notes. Okay, physics notes, and it is available in the form of PDF. Okay, it will be available in the form of PDF with what? With annotations. Okay, with annotations it will be there. With annotations. Is it good, students? So please take the screenshot, and YouTube students, please take the screenshot. Okay. Next, this is the what? Telegram group link. Okay, this is a seed group link. Basically, the name would be seed. Yes, Nimora will be solving it. Let us take everything one by one. Okay, let us just talk about certain things. Then we'll be solving numericals. Don't worry. Is it good? Let me know. Yes. Next, what? This is the Telegram link. Please take a screenshot. Okay. Please take a screenshot of it. So what are the things? Here is the physics notes. Here is the Telegram group link. Is it good? Let me know, students. Everyone has to join this link and also access the PDF. Did you take the screenshot? Okay, good. Everyone has taken the screenshot. Can I proceed? Okay, yes. Okay, others, let me know. Good. Okay, if that is the case, sweetie, let me know. If that is the case, then let us proceed. Okay, now, very good. Now, students, talking about JEE examination and in 2022. Don't worry. Let us, okay, bhai, very good. Let us talk about it. See, here in this year, there will be two attempts for JEE. Okay, there are 2 attempts for JEE. बस 2 ही अटेम्प्ट दे रहे हैं. कब दे रहे हैं? एक सेशन 1 है, एक सेशन 2 है. कब है? एक है अप्रैल में, एक है मई में. कौन सी डेट में? स्टूडेंट्स, डेट पता है आपको कौन सी डेट में है? स्टूडेंट्स, the examination date would be this date. Okay, this will be the date. What? For the first paper, this is for the session 1, and for session 2, when is the date? This is the date, students. ठीक है, याद रखना. Last year it was 4 attempts, but this year it will be only be for students 2 attempts. ठीक है ना? ये दोनों आ गया. फिर इस बार आपका एग्जाम, हाँ रुतुजा will solve it. Give me a time. Okay, let us take everything one by one. एक साथ नहीं कर सकते ना सारे चीज, तो एक साथ आराम से पहले JEE के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. Don't worry. Okay, I'll be solving. Okay, see, only the information that is kept to, that has to be kept in mind is this time for you, since you are in 11th, there will be only 2 attempts. Last year they gave 4 attempts, but क्या हुआ? इस बार उन्होंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट दिया. तो जब आप 12 पे आओगे उस टाइम एक ही अटेम्प्ट हो सकता है. ठीक है, ये हो सकता है, बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है. इज इट गुड? नाउ देन व्हाट आर द पेपर्स? बेसिकली the papers will be, paper 1 will be based on BE or BTech. अगर आपको BE और BTech करना है. Paper 2A will be what? Architecture, and paper 2B will be planning. ठीक है ना? Is it good? And architecture and both planning will be what? 3 hours 30 minutes time, and आपका BTech जो है वो 3 hours of time है. ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ शिफ्ट के बारे में बोल रहे कि कब होगा. Is it good? Okay, ये सब इंफॉर्मेशन अभी याद रखो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन चाहिए, देखो, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली इज टेलिंग अबाउट द फीस. जो फीस है ना, ये याद रखना. जो फीस होता है बेसिकली क्या होता है? 650 होता है जनरल के लिए. ओके, जनरल, EWS और OBC NCL. ठीक है,
फिर जो SC/ST के लिए होता है वो बेसिकली मेल एंड फीमेल में डिवाइड है, मेल एंड फीमेल के लिए डिवाइड है, ठीक है ना? इज इट गुड स्टूडेंट्स? लेट मी नो, इज इट गुड टिल हियर? So yes, I mean the fees are structured something like this. Is it good? Now coming into the information that is required by you. Okay, see the information is, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो पेपर 1 होगा, जो बीटेक का पेपर होगा ना, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये याद रखो. The people who are going to write for BE or BTech, ठीक है, then the examination will be what? Computer based test, ठीक है? Is it good? And for what? Paper 2 है BE architecture, there will be what? Mathematics aptitude test in a computer based test, ठीक है? एक computer based test होगा, एक होगा drawing test होगा in pen and paper offline mode, ठीक है? क्या हो रहा है देखो, जो आपका बीटेक है वो तो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन जो आपका आर्किटेक्चर है एक कंप्यूटर बेस्ड है, एक बार आपका कंप्यूटर बेस्ड है, दूसरी बार जो ड्राइंग टेस्ट है वो होगा पेन एंड पेपर. स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी नो, आर यू गाइज राइटिंग इट डाउन? आर यू गाइज राइटिंग इट डाउन? लेट मी नो इन द चैट. यस सर नो? दावणगेरे JNV स्टूडेंट्स, एवरी JNV स्टूडेंट्स, बागलकोट, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, उत्तर कन्नड़ा, लेट मी नो इन द चैट. अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो फिर, ठीक है ना? इज गुड. And paper 2B will be what? B planning. Basically, it is what? Maths and aptitude and planning based on what? Computer based test. Acha, is it good? It's good. It's good. Acha, path. ठीक है. Don't worry. And for NEET students, don't worry. We'll be talking about it in one day, in one more class. Okay? Since हमें class भी करना है, फिर ये भी information दे रहा है, इसलिए मेरे सारे information एक ही दिन में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? Now, so and see, the thing is, one of the major changes that they have formed is the languages. Students, कौन सी languages पे होगा? देखो, इन सारे languages पे इस बार एग्जाम होगा, ठीक है ना? So don't worry if you are not, if you are not comfortable in one language, you are able to answer the questions in another language too. Is it good, students? Okay, this should be very very helpful. Also remember students, 75% आपका जो बोर्ड का मार्क्स का कट ऑफ था ना, इन्होंने इसको हटा दिया. दे हैव व्हाट? रिमूव्ड दिस क्राइटेरिया फॉर दिस ईयर. ओके स्टूडेंट्स, इज इट गुड? नाउ talking about, okay, now this is the most important information that you need to take care of. Okay, what is that? In B and B Tech, what are the subjects? One is mathematics, physics and chemistry. Okay, so what are the types? One is objective type questions, one is multiple type questions, and questions for which answer is a numerical value. Samjhe students? So what is one question is basically will have A, B, C, D options. Another will have what? Multiple choice questions. Yes, basically multiple choice है. एक और है क्या है कि numerical value. मान लो एक क्वेश्चन है डांस डैश, क्या होगा? डैश इज द नेम ऑफ जो भी है, नेम ऑफ अ सिटी जो भी है, तो ये इंटीजर होगा और ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स, MCQ टाइप्स. इज इट गुड? सिमिलरली फॉर व्हाट? बी आर्किटेक्चर, व्हाट इज दैट? देयर इज मैथ्स एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग टेस्ट. उसमें क्या क्या है? एक MCQ है एंड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. सिमिलरली फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट देयर इज MCQ वैल्यू एंड क्वेश्चंस टू बी, जो भी ड्राइंग टेस्ट है वो ड्राइंग के लिए होगा, ठीक है? ये दोनों क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन जो ड्राइंग है वो पेन एंड पेपर टेस्ट है, ठीक है? सिमिलरली इन बी प्लानिंग देयर इज मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? देयर आर प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस. सो व्हाट आर द टाइप्स ओवर हियर? ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ एंड द क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, ठीक है ना? जो एक MCQ होगा, एक इंटीजर होगा, उसके बाद क्या होगा? एक दैट इज JEE एडवांस, ठीक है ना? If you want to go to IIT, you need to clear JEE advance. Is it good? IIT जाना है तो ठीक है. ये NIT के लिए, जो JEE मेंस होगा ना वो NIT के लिए होगा. Okay, then talking about planning based questions, what will be there? It will be MCQ types. Is it good, students? So ये क्या होगा? ये computer based ही होगा. Is it good, students? All good, all good. हम subject में जाएंगे. Don't worry. This information was needed by certain people, so I am what? Clarifying certain things. Okay students, now talking about what subject wise कैसे divide होगा. ये students, I'm telling you again, take a screenshot of this. This is very very important for everyone.
फर्स्ट थिंग इज व्हाट, बीई बीटेक, बेसिकली अगर इंजीनियर करना चाहते हो तो क्या होगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। टोटल क्वेश्चंस आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा, टोटल क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस होगा, ठीक है। लेकिन 30 क्वेश्चंस में बेसिकली क्या होगा, ये 20 क्वेश्चंस क्या होगा, एमसीक्यू होगा, ये 10 क्वेश्चंस क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स इन दिस 10 क्वेश्चंस you need to do any 5. Okay, is it good? So total number of questions that you need to do is what, 25, total 25, इसमें भी 25 और इसमें भी 25, is it good? And total ये कितना 25, so total questions कितना होगा students, let me know, 75 questions, ठीक है ना। So in JEE for BTech, the total number of questions you need to solve is 75 questions, बस इतना ही। Is it good students? So उन्होंने वही बोला, have 2 sections, section A will be MCQ and section B will contain questions whose answer to be filled in a numerical value, okay। And in B section they have to attempt only 5 questions students, कितना, only 5 बोलते हैं ना, 50 रुपए में सिर्फ कितना, सिर्फ 5 ही, okay। And students this time they have changed the majority thing, that is there will be negative marks for both the sections, ठीक है, दोनों sections के लिए negative marking होगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या हो रहा है कि अगर सही आंसर के लिए +4, ये फॉर राइट क्वेश्चन राइट, फॉर रॉन्ग के लिए -1 रॉन्ग। इज इट गुड स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट। यस, दिस इज द मेजर थिंग दे हैव चेंज दिस ईयर, वरना ये नहीं था। जो इंटीजर के लिए ना, जो इंटीजर के लिए पहले मार्क्स नेगेटिव मार्क्स ही नहीं था, इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। इज इट गुड, नाइस, वेरी गुड, ओके। others let me know in the chat. सोनू लेट मी नो, स्फूर्ति, यहां तक सही है सब, ओके भावना, वेरी गुड। नाउ सो अगर आप क्या, वही बोला मैंने, क्या हो रहा है देखो, एमसीक्यू के लिए क्या होगा, +4 -1, सिमिलरली क्या होगा इसमें भी +4 -1। अगर आपने आंसर ही नहीं किया तो 0 मार्क ही आएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं होगा। साक्षी, ओके गुड, ऋतुराजा नाइस, वेरी गुड। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर में क्या होगा, बी आर्किटेक्चर में आपके पास मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्या होगा, आपको 20 सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा मैथमेटिक्स में, उसमें 20 क्वेश्चंस करना है, लेकिन आपके सेक्शन बी है कितना करना है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही करना है, ठीक है ना, ओके। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी, ठीक है ना। इज इट गुड, इज इट गुड स्टूडेंट्स। एंड द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट वैल्यू, ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट में कितना है क्वेश्चंस, इसमें 50 है, इसमें क्या 2 क्वेश्चंस है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 है, total marks is 400. Is it good? Yes or no students? Very nice, take a screenshot. Then talking about B planning, what is it, what is the planning, there will be mathematics aptitude and planning. Similarly there are 20 questions and 10 questions in section B. You need to answer only 5 in section B, and there are how many, 20 questions and 25 questions. Is it good students? So how many questions you need, there are total questions of 105, but you need to do how many, 100 itself. Is it good? So total number of marks is 400. सही है, इसमें भी वही है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा इसमें स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बोला, 30 प्लस क्या, इसमें सिर्फ 25 करना है, इसमें आपको पूरा 50 ही करना है, इसको आपको 02 करना है, कितना होगा इसमें 77 क्वेश्चंस। इज गुड, 77 क्वेश्चंस है ना, यस और नो स्टूडेंट, यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। Now, similarly, what is it for MCQ? It will be +4 -1 and no mark 0. बस वही है, सिमिलर टाइप है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। Now, उसमें भी एक है कि प्लानिंग में 2 पेपर है ना, पार्ट वन में क्या होगा कि आपको जो भी है ये मार्क्स है, ठीक है। दिस इज दी व्हाट, द वे ऑफ मार्किंग सिस्टम। विशाल, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। नाउ व्हाट, अच्छा ये देखो, ये पूरे एग्जामिनेशन का पैटर्न है और कितना मार्क्स होगा, ठीक है। देखो, फॉर नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स सिर्फ
3 घंटे मिलेगा, लेकिन जो डिसेबल्ड हो गया उनको 4 आवर्स मिलेगा. सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो. ओके, इसमें 3 आवर्स मिलेगा, लेकिन इनको 4 आवर्स मिलेगा. एंड 2A में 3 आवर्स 30 मिनट्स मिलेगा, इनको 4 आवर्स 10 मिनट्स मिलेगा. इस गुड, थोड़ा ज्यादा मिलेगा बस, और कुछ नहीं. ओके स्टूडेंट, दैट इज क्लियर. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? लेट मी नो इफ दैट इज द केस. Yes or no with the thumbs up. Let me know with the thumbs up. Okay, Ganesh, is there any doubt? Ganesh, let me know. Okay, Prathamesh, nice. Ganesh, let me know, is there any doubt? Okay, यहाँ तक सही है सब. Very good. Vishal, very good. Now, if that is the case, students, then let us solve yesterday's numerical. So numerical क्या बोल रहा था? What was the numerical saying? The numerical was saying that, just a second, एक मिनट रुको. The numerical was saying to find the position of equilibrium and type of equilibrium for, what is the homework question? U is equal to क्या था? What is the homework question? 12x minus x cube or plus y cube minus 3y. ये था? Was this a question, students? Let me know in the chat. Yes or no? Okay. Now, how to solve this? इसको solve कैसे करें? देखो, हमारे पास दो चीज है. क्या था हमारे पास? हमें पता था कि माइनस du by dx क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम. और हमारे पास एक और था, वी हैड टू चेक विद, अगर इक्विलिब्रियम है तो वी नीड टू चेक व्हाट, प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर का इसका वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, ये चेक करना था. लेकिन हमारे पास अभी जो कंडीशन है वो ये है और ये है कि नहीं? ऑल्सो वी नो दैट माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या है? एफ है ना, एफ एक्स है. नाउ स्टूडेंट्स, ये अगर आपको इसको देखोगे तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये x का वैल्यूज है, ये y का वैल्यूज है. यस और नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो. यस, तो मैं इसको ux बोल सकता हूँ और इसको uy नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ ना. अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो बेसिकली u इज इक्वल टू व्हाट, ux प्लस uy है कि नहीं? अभी हमें पता है कि क्या माइनस ड्यू जो होगा, रुको एक मिनट रुको, सॉरी, एफ एक्स जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? माइनस ड्यू बाई डेल्टा डेल यू बाई डेल एक्स होगा. क्यों? क्योंकि अब हम एक्स और वाई में कर रहे हैं. एंड एफ वाई क्या होगा? माइनस डेल यू बाई डेल वाई होगा, है कि नहीं? लेट मी नो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट. यस, तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसे किया, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हमारे पास एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं इसको डी नहीं लिख रहा हूँ, डेल लिख रहा हूँ, है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? अगर ऐसे लिखा तो मुझे ये बताओ, मैंने इसको बाद में लिखूंगा, मुझे ये बताओ ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इफ आई डिफरेंशिएट व्हाट्स पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ 12x minus x cube plus y cube minus 3y क्या होगा? लेट मी नो स्टूडेंट्स. अगर ऐसा किया तो, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा. यस और नो? तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द चैट, जल्दी बताओ. सिमिलरली इफ आई राइट एफ y, can I write it as minus del u by del x, del y, sorry, del y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो क्या होगा? माइनस del by del y 12x minus x cube plus y cube minus 3y. अब देखो ये कांस्टेंट है ना, ये 0 हो जाएगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया क्या आ जाएगा? माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3, है कि नहीं स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया, ये फर्स्ट वन से आया, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वी यूज दिस. यस और नो स्टूडेंट? जल्दी बताओ. यस और नो? एवरीवन. विशाल वेरी गुड, पूनम वेरी गुड. ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां से आ रहा है? यहां से आएगा ना. यस और नो स्टूडेंट्स? यहां से आएगा, तो सेकंड वन यूज करो. तो कैन आई राइट, ये देखो, ये जो इक्वेशन आया, ये आया थर्ड, ये वाला फोर्थ. नाचन. ओके, यस सुनो,
ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट कर रहा है ये एक्स वैल्यूज है, ये एक्स वैल्यूज है और ये वाई वैल्यूज है. Yes or no? Now there are two values. Now you know that in order to find the equilibrium, you have what minus du by dx equal to 0 इक्वेट करना है. लेकिन आपको एक और चीज है कि इसको जो वैल्यू है ये ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, माइनस du by dx इज इक्वल टू एफ एक्स. सिंस देर इज टू वैल्यूज, दैट इज एक x की रिस्पेक्ट x की वैल्यूज है, एक y की वैल्यूज है, तो कैन आई राइट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स. लिख सकता हूँ ऐसे? श्वेता एंड यश, लेट मी नो इन द चैट. ये दोनों ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? श्वेता, यश, हाँ. अगर मैं अभी इस रिस्पेक्ट में, क्या कौन सी है, एक्स है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में ये यू को डिफरेंशिएट करूं, देखो 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y, मुझे ये बताओ अगर मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट किया क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा. यस Shweta and Yash, let me know. Yes, Purti, very good. So it will come 0. Yes, and I'm differentiating this. ये तो आपको differentiation आता है, तो अगर मैंने इसको differentiate किया ये आ जाएगा minus 12 minus 3x. Similarly मुझे y का पता है, मैंने वैसे लिया, ये क्या हो जाएगा? ये constant हो जाएगा. ये constant है ना basically. This is basically constant over here and this is basically a constant. अगर कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई करूँ तो 0, तो मुझे ये आ जाएगा 1 and 2 and 3 and 4 इक्वेशंस. यस और नो स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. विशाल, वेरी नाइस, वेरी गुड. श्वेता, यश, यस. नाउ वी वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. वेरी गुड. पोजीशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको पता है कि माइनस डेल यू बाई डेल एक्स को 0 इक्वेट करो, और एक और है माइनस डेल यू बाई डेल वाई को 0 इक्वेट करो. तो अगर ऐसा किया, आपको पता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? माइनस 12 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेरी गुड, 4, and you get x value as plus or minus 2. सही है? वेरी गुड. हाँ, यस कुमार, वेरी गुड. सिमिलरली इफ यू राइट y, हमें क्या आ जाएगा? क्या है ये इधर? 3y स्क्वायर माइनस 3, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस इक्वल टू 0. यहां से हमें क्या आ जाएगा? हमें आ जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and we get y as plus or minus 1. सही है? तो हमें कौन सा वैल्यू मिला? x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1. सही है? यहां तक सही है? लेट मी नो स्टूडेंट्स इन द चैट, यस और नो? स्टूडेंट्स लेट मी नो इन द चैट. JNV स्टूडेंट्स, बಳ್ಳಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ್, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, no one is talking today. What happened? ತುಮಕೂರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು? What is happening? Uttarakhand students, let me know in the chat. Pratiksha, let me know. Now, what is the value? This is 2. This is what? Plus 2. मुझे ये बताओ. Now, here there are combination of values. कौन सी combination होगा students? Let me know. Sorry, एक मिनट रुको. ये y है. ये वाला y है. y. Yes. कौन सी combination होगा students? 2,1 है कि नहीं? 2,1 होगा, 2, माइनस 1 होगा, फिर कौन सी होगा? -2,1 होगा और -2, -1 होगा. यस और नो स्टूडेंट? लेट मी नो इन द चैट. सही है? ये पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होगा ना. दीज आर दी पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. यस, वेरी गुड. अगर ऐसी बात है, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कैन आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. अगर मैं इस पॉइंट्स को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूं तो ऐसा नहीं होगा. यहाँ और यहाँ कौन सी वैल्यू है? 2, सॉरी, कौन सी वैल्यूज है? 2,1, 2, -1, 2, -1, 2, -2, -1 और -1 और -2,
1 होगा, है कि नहीं स्टूडेंट? कैन आई जॉइन? ओके एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, ये 4 पॉइंट हमें मिल जाएंगे. I'll join this, I'll join this value. सही है. If I join this value, what are the values students? 2 comma 1, 2 comma -1, ये -2 comma -1 और ये वाला -2 comma 1, है कि नहीं स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. A, B, C and D. Yes or no? Very good, very good. लेकिन अभी we have to find, क्या एक और फाइंड आउट करना है हमें? The type of equilibrium. लेकिन इसमें हम टाइप कैसे फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स? लेट मी नो टाइप कैसे फाइंड करें. देखो आपको एक चीज आया, क्या आया? del u by del x. क्या आएगा हमें? क्या आया स्टूडेंट्स? हमें आया व्हाट? -12 -3x², है कि नहीं? एंड del u by del y क्या आया आपके पास? 3y² -3. तो स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करें? हाउ डू वी फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? देखो क्यों, मैं बताता हूँ क्यों. देखो अगर मैंने यहाँ अप्लाई किया, इसको क्या करना है मुझे? फिर से डिफरेंशिएट करना है, dx², तो क्या हो जाएगा? -6x होगा. अगर मैंने यहाँ क्या, ये x है, x1 है, x2 है, सॉरी x1 y1 है, लेट मी टू पुट दिस वैल्यू, दैट इज 2. यस, सो क्या होगा? -2 लाया तो -12 आ गया. 2 वैल्यू इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2, है कि नहीं? तो ये क्या है बेसिकली? व्हाट स्टूडेंट? दिस इज अनस्टेबल. यस, सिमिलरली फॉर दिस पोजीशन ओनली, अगर मैंने यहाँ इसको d² by dy² किया तो क्या आ जाएगा? ये सही है ना जो मैंने लिखा? यस, 6y आ जाएगा. अगर मैंने 1 वैल्यू किया, इफ आई पुट y इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम आया. एक ही पोजीशन में 2 इक्विलिब्रियम कैसे आ जाएगा? ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सो एट द वन पोजीशन इटसेल्फ, जो एक ही पोजीशन में हमें क्या मिल रहा है? एक अनस्टेबल, एक बार अनस्टेबल मिल रहा है, एक बार स्टेबल मिल रहा है. लेट मी नो स्वीटी, समझ आ रहा है? विशाल, इज इट अंडरस्टैंडेबल? एक बार मैंने x इज इक्वल टू 2 लगाया तो ये हो गया, एक बार y इज इक्वल टू 1 लगाया, ये हो गया. यस सुमन, वेरी गुड. लेकिन एक ही पोजीशन में दो स्टेबल, मतलब 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है स्टूडेंट? ये कैसे हो सकता है? दिमाग की दही हो रहा है क्या? लेट मी नो, let me know students, JNV students, let me know. Students, the reason behind is because we are talking here in terms of 2D, in terms of 2D. मतलब देखो अगर मैं A पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट बोल रहा है ना 2,1, ये बोल रहा है कि अगर मैंने x एक्सिस में गया, मतलब अगर मैं x है, ये y है, ठीक है, अगर मैं x एक्सिस में ट्रैवल करूंगा ना, तो जो मेरा इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा. तो वही बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? कि अनस्टेबल है. लेकिन अगर मैं क्या y एक्सिस में जाऊंगा तो क्या आएगा? वो स्टेबल आ जाएगा. बस यही बोल रहा है और कुछ नहीं. इज इट गुड? इज इट गुड स्टूडेंट? सिमिलरली इफ यू फाइंड आउट फॉर -2,1, फॉर -2, -1, 2, -1, आपका जो वैल्यू आएगा, जो इक्विलिब्रियम में आएगा, वो अलग अलग आएगा. ठीक है? इज इट गुड स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? प्रतीक्षा, लेट मी नो. बस वही हो रहा है कि जो रीजन आ रहा है ना, वो क्यों? क्योंकि हम 2D में जा रहे हैं. मतलब मैं एक्स एक्सिस में चलूंगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ चलूंगा, हाँ. So students, see, basically what is happening is we got what combination of values, x की y की combination of value. So let me take the first combination of value, that is 2,1. Now you know that if you double differentiate it, if you what differentiate it again, you will understand what type of equilibrium it is. Now students, मैंने एक बार differentiate किया, ठीक है, मैंने पहले बार differentiate किया, ठीक है, एक बार differentiate किया, उसके बाद I'll use the x value, x1 as what? 2. If I use this, I'll get this value as what? d² by dx² as what? -12. Now this is basically what? Less than 0. This is what, Chitrika students, this is an unstable condition. Yes or no? Now similarly, I'll put y1 as what? 1. If I put y1 as 1, I'll get what? If I differentiate this again, sorry, not this.
अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया फिर से तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, सॉरी, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इफ आई डबल डिफरेंशिएट दिस अगेन, टेल मी जल्दी, if I double differentiate this again, if I differentiate this again, let me know in the chat, everyone. Yes, 6y आ जाएगा. Now if I put y1 equal to 1, क्या आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा. This is greater than 0. ये आ गया क्या? This will get unstable. Yes or no? Now at the same position A, for two different values, we are getting two different equilibrium. Why? Why? Because the reason is we are talking in terms of what? 2D. बस वही रीजन है और कुछ नहीं. क्यों? मतलब ये बोल रहा है अगर मैंने यहाँ इस तरफ भागा तो क्या हो जाएगा? मेरा पोजीशन अनस्टेबल होगा, और मैंने इस तरफ या उस तरफ भागा, उल्टा भी जो भी है, जो भी रीजन है, उल्टा मतलब आउटवर्ड और डाउनवर्ड्स क्या होगा? It will be stable. Is it good? Did you understand, students? Let me know in the chat. Vishal, Poonam, let me know in the chat. Ashok, okay, very good. Uttarakhand students, let me know in the chat. Very nice, sweetie. Parth, Abhay. A lot of students. Where is Abhay? Abhay, Parth. Parth is here. Yes, Pratiksha, Poonam, Rutuja, Shivraj, Shraddha, let me know. Spurti. Yes, okay, very nice. Now, अगर ऐसी बात है तो किस किस की दिमाग की दही हो जाए, हो गई, बताओ किस किस की हो गई कि इतना इतना सारे प्रॉब्लम्स देखकर? लेट मी नो स्टूडेंट्स. बहुत कुछ हो गया ना, हमने बहुत कुछ कर लिया है कि नहीं? यस और नो? अचार हो गई क्या? अच्छा. It's okay, students. Certain problems are very complicated. Okay, it doesn't mean that you need to take. अच्छा, अच्छा, लेकिन थोड़ा ये हो. अच्छा, very good. No problem, sweetie. So see, there are certain questions which are complicated, but once you solve it again and again, make sure that you are solving the questions again and again. Solving questions again and again. ठीक है? Again and again. आपका सारा problems मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा. Is it good? So टेंशन मत लो. हाँ, अरे रे रे, सबको हो गया क्या? Okay, students. Now, if that is the case, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम बात करें. Is it good? ज्यादा प्रॉब्लम्स कर लेना तो कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में बात करें. सो स्टूडेंट्स, सी यहाँ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. यस यस पार्थ, श्योर श्योर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ये बोल रहा है. लेकिन स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट स्टिक इनटू दिस. We are going to solve numericals. We are going to solve numericals where we will find that the conservation of energy, what students? The conservation of क्या है? Energy is not valid. जो conservation of energy है वो कहाँ not valid है, वहां भी हम क्या numerical solve करेंगे. Is it good? Let me know, students. So basic equation that you need to take care of is what? Kinetic energy initial, क्या? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस व्हाट स्टूडेंट्स? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ठीक है ना? ये बेसिक फॉर्मूला है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है. इज इट गुड स्टूडेंट? लेट मी नो इन द चैट. लेट मी नो. सही है? यस. अदर्स. ओके, गुड. नाउ आवर वर्क इज, जो हमारा काम है वो ये करना है कि ये जो है हाउ डिड इट कम, हाउ डिड इट अराइव. मुझे ये बताओ ये अराइव कैसे हो गया? लेट मी नो इन द चैट. कोई बता सकते हैं कि अराइव कैसे कर सकते हैं? हाउ डिड वी अराइव एट इट? कोई बता सकता है?
Have you got any idea how did we arrive at it? Now, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, now let us take a body. अच्छा, very nice, work done in both. Okay, take a body for which forces are acting. ठीक है, forces are acting. How many forces are acting? Lots of forces acting. Okay, how many? Lots of. So कौन सी body है? Let me take this body. ठीक है, मेरे पास एक wall है, एक wall है. Now this is the wall. Okay, now this wall is rough. ठीक है, अगर ये रफ wall है, मेरे पास एक और है, एक ऐसा है. नाउ स्टूडेंट्स, एक स्प्रिंग है मेरे पास, सॉरी एक मास m है. ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है with which it is attached. Okay, now students, there is mass m. Now if I'm applying a external force, now students, let me know what are the forces that are acting on this body. मुझे ये बताओ अभी कौन सी फोर्सेस एक्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर, ये तो बता सकते हो आप. लेट मी नो कौन सी फोर्सेस एक्ट करेगा इस बॉडी के ऊपर. ठीक है, वेट, हाँ वेरी गुड. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज विच कंजर्वेटिव फोर्स यू आर टॉकिंग. देख, मैं प्रेस कर रहा हूँ ना. ठीक है, जो आप बोल रहे हो ठीक है, सही है, वेरी गुड. हाँ स्फूर्ति, विच इज द कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज एक्टिंग. देखो, एक तो आपने बोला कौन सी, एफ जी, है कि नहीं. वेरी गुड चित्रदुर्ग स्टूडेंट्स, कौन सी, एफ जी इज एक्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, मुझे एक चीज बताओ, अगर एक स्प्रिंग अटैच्ड है, मैं उसको दबाऊंगा तो स्प्रिंग एक फोर्स लगा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक फ्रिंग फोर्स होगा ना, फोर्स बाय द स्प्रिंग, है कि नहीं. नाउ मुझे ये बताओ, अगर ये रफ है, ये रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा इधर, एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा. यस और नो. मुझे ये बताओ, ये वॉल एक इसमें लगा है, कौन सी सरफेस पे है, वोंट देयर बी अ नॉर्मल फोर्स. यस और नो स्टूडेंट्स, यस और नो. सो कौन सी फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हैं इसमें. द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग आर स्टूडेंट्स, F normal force acting, F G is acting, F spring force is acting, F friction is acting. So these many forces are acting on this body. Yes or no? मुझे ये बताओ. Yes Rajendra, Vishal, let me know. Vishal, very good. Yes or no students? Very good, very nice. Everyone has to answer. Spurti, let me know. Shweta, Rutuja, Ranjit, everyone has to answer. यस. तो मुझे ये बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है. व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यस और नो. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑफ न्यूटन, व्हाट, नॉर्मल फोर्स प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए. यस और नो स्टूडेंट्स. मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यस और नो. लेट मी नो स्टूडेंट्स. यस. मैं इसको अगर इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद, इफ आई व्हाट, मल्टीप्लाई बाय dx by dx. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dx by dx हो जाएगा. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, dx by dt. व्हाट इज dx by dt. a is equal to dv by dt dx into dx by dt. Very good path, very nice. So what will happen, a is equal to what, dv by dx. yes, dv by dx into v. या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, into v, और a is equal to v into dv by dx. ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स. लेट मी नो इन द चैट, यस और नो. यस और नो, लेट मी नो. वेरी गुड. तो
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो देयरफॉर, तो मैंने क्या बोला, इस सारे फोर्स को नेट फोर्स बोला ना, इस सारे फोर्स को मैंने क्या बोला, एक्स, वेयर इज एक्स, एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ना, एक्सिस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। dx by, what is dx by dt? Dx is what, change in displacement with respect to time, or change in displacement with distance with respect to time, whether if they're traveling in the same direction. Yes, yes, okay, very good. Now if this is a case, can I write f net is equal to q? F net क्या है basically? F net is जो भी forces है, Newton, normal force, gravitational force, friction force and the external force. Okay, sorry, I left the external force here क्योंकि हमारे पास एक external force भी act कर रहा है, इधर plus external force. Yes, now here can I write F net is equal to what, v into dv by dx? Yes or no students? मुझे ये बताओ, मैं इसको थोड़ा उधर मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करूं तो कैन आई राइट एफ नेट इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, ऐसे लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ, मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, आप इसको कहीं देखा है क्या, आपने इसको कहीं 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 देखा है क्या? लेट मी नो स्टूडेंट्स, कौन सा, इसको कहीं देखा है क्या? लेट मी नो स्वीटी, पाथ, प्रतीक्षा, यश, लेट मी नो, कैन आई से दिस एज, very good students, very nice. Yes, this will be what, work done by the net force. Very good, that is what I wanted. Yes, very nice. Vishal, let me know, ये work done होगा ना? Yes, और जो velocity होगा v, वो कहां से कहां तक होगा, v1 से v2 होगा। तो can I write students this as work done is equal to what, integration of v1 v2 v dot dv, लिख सकता हूं मैं ऐसे। वेरी गुड। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, एफ नेट इज इक्वल टू, सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज अ मास, देयर इज मिसिंग, यस, दिस इज एम वी, एक मास मिसिंग है, एम वी कहा, क्योंकि एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। यस बड़ा स्टूडेंट्स, आई मिस दैट, नाउ आई एम टेकिंग, ओके। नाउ एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू व्हाट विल हैपन, वी स्क्वायर बाई 2 इंटू, not into v1 into v2. Yes, now I'll get work done by net force is equal to m into m by 2 into v2 square minus v1 square. Students, ये कहीं देखा देखा ऐसा लग रहा है ना, f net is equal to, कहीं देखा देखा लग रहा है ना मुझे तो, f v2 square by 2 minus m v1 square by 2। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, ये क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। f net is equal to काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा ना। यस, बात वेरी गुड। हाँ, ये क्या होगा, यस स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन अब आप पूछेंगे सर आप तो अभी क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों प्रूव किया, है कि नहीं? देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी वर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन आप मुझसे पूछोगे सर, आपने पूछो ना, फिर अगर ऐसे डाउट हो रहे हो तो पूछो कि सर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आपने वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों प्रूव किया, क्यों, पूछो ना क्यों, आस्क व्हाई, आस्क, नो वन इज आस्किंग। यस पूर्ति, दैट इज व्हाट, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। यस, जनता जानना चाहती है भाई, क्यों? क्योंकि द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी व्हाट, फाइंड आउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें इधर से, समझे? क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, समझे? इज इट गुड? लेकिन कैसे मिलेगा ये फाइंड आउट करना है बस। तो क्या है, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी फाउंड थ्रू कहां से, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यस, ओके, लेकिन कहां से, ओके, कहां से मिलेगा? ओके, एक और इंफॉर्मेशन है, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स,
work energy theorem is valid in every frame. It is valid in every frame. ठीक है, ये याद रखना, प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ how do you find the conservation of energy through what? Work energy theorem. Students, let me know. देखो, आपके पास वर्क डन कौन सी फोर्स की वजह से आ रहा है? लेट मी नो. एक आ रहा है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आ रहा है क्या आ रहा है? एक आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. यस. एक और आ रहा है व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स. और एक और कौन सा आ रहा है? ग्रेविटी एक्सटर्नल वर्क डन. यस, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स. यस, वेरी गुड. विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास? विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. यस और नो? यस. सो स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है, इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बोलते? इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बोलते क्या? यस. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. हाँ, एक और चीज, हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं? व्हाट डज हम से फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? वी से इट एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यस और नो स्टूडेंट? यस और नो? फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. यस. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वर्क डन बाय दी, एक मिनट रुको, इसको मैं वर्क डन बाय दी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लिख सकता हूँ प्लस वर्क डन बाय दी नॉर्मल फोर्स विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अब देखो, हमने अब सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे ये बताओ, यहाँ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा क्या? क्यों? देखो, ऐसा वॉल था, ठीक है, एक मास था इधर और नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है इधर Fn. लेकिन स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ना. नॉर्मल फोर्स एक्टिंग दिस साइड, डिस्प्लेसमेंट इधर S. तो एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना. तो स्टूडेंट्स, विल दी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा? यस और नो? बाय बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स Fs cos थीटा. थीटा तो 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा. यस और नो स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. यस और नो? एवरीवन. Rajendra, which is why what you're asking, Rajendra? Let me know in the chat. Everyone in the chat, please let me know. Will this be 0? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा. यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड. हाँ, तो यस. तो स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द व्हाट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. ऐसे लिख सकता हूँ. यस, आई कैन राइट इट. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो डेल यू है वो माइनस ओमेगा सी है. यस और नो? नॉट ओमेगा सी, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सॉरी, माय बैड. यस, वेरी गुड. सो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ. सो विल आई गेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस प्लस डेल्टा यू. यस और नो स्टूडेंट्स? वेरी गुड. यस. यस. तो आपको अभी पता है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? हमें ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. यस, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल. यस और नो स्टूडेंट्स? लेट मी नो इन द चैट. यस. तो मैं इसको एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल
minus of kinetic energy initial plus potential energy initial. ऐसे लिख सकता हूं या ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना? Yes or no, students? Now, students, this is a formula that you need to take care of. समझे? Is it good? Yes or no, students? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? देखो, अगर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तो आपको उसके बारे में चिंता ही नहीं करनी है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या, जो डिस्प्लेसमेंट होगा 90 डिग्री होगा। तो आपको क्या क्या वेरी करने पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल फोर्स और व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो कैसे हो गया? द कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स was changed into what it was changed into potential, है कि नहीं? तो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? इज इट गुड? लेट मी नो स्टूडेंट्स इन द चैट, लेट मी नो। थोड़ा रिकैप कर लो। इन द मीन टाइम आई लॉन्च द एनपीएस पोल, ठीक है? आई एम लॉन्चिंग द एनपीएस पोल स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर द एनपीएस पोल्स एंड प्लीज लेट मी नो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। Let me know. Rajendra, please let me know. Yes, very good, very good. JNV, Bagalkot, Ballari, students, Tirugura students, Davangere, Tumkur, Uttara Kannada, please let me know. Please let me know. Yes, okay. Yes, okay. Very good, very good. Very nice. Arthait sir, okay, very nice. Okay. But very nice. लेकिन देखो, इल्लदिद्रे how did we get kinetic energy initial plus potential energy initial? How did we get this? How did we get this formula? Can anyone tell me? How did we arrive at this formula? Let me know. Dekho, we had this formula, but how did we arrive at this formula? Let me know. The reason is, see, always remember this formula. This is an important formula, students. The only thing is that most of your formulas, or more 80% of your questions will say that work done by external force is 0, work done by non-conservative force is 0. That is why if you put 0, okay, if you put this 0, you will get this as 0. Then you will get what? Kinetic energy initial plus kinetic energy final. Sorry, my bad. Potential energy initial, okay, is equal to what? Kinetic energy final plus potential energy final. This is how you get it. Okay, why? 80% of your questions क्या होगा कि बोलेगा कि एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो जाएगा. इज इट गुड? Yes, students, very good, very nice. So everyone, please answer the NPS. Please let me know. Yes, very good, very nice. Others, please answer the NPS. Let me know. Okay, good. Others, is it good, students? Let me know. When we are writing this, we write this when this is 0. Okay, that is how we get. Okay, sweetie, nice. Others, Jain with Chittagurga, Bagalkot students, very good. Yes. Now, if that is the case, students, we had to solve certain numericals, but we'll be solving it in tomorrow's class. So, see, basically what they do is, most of the questions you will see that this is written as energy initial is equal to energy final. Bas. Potential energy plus kinetic energy is the total energy, right? Yes or no? Kinetic energy plus potential energy is the total energy. That is energy equal to the what? Initial energy is equal to the final energy. Is it good? And everyone, please answer the NPS. And always remember, students, this is valid when, okay, just a second. What did I do? This is valid when work done by the non-conservative force is 0 and work done by external force is 0.
Yes. Yes or no, students? Let me know. Okay, good, 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 good. Now, yes. And also, students, there is another information. Now, this is basically called what? This is basically called conservation of mechanical energy. Conservation of mechanical energy. Is it good? Yes, students, let me know. Yes, very good. Now, if that is a case, let's do one thing. I'll give you a short homework. It's a very simple homework. You need to do it, okay? So that is what we proved, okay? What is happening? Kinetic energy initial plus potential energy initial is equal to what? Potential energy, kinetic energy final plus potential energy final. When is this is valid? When work done by the non-conservative is 0 and work done by conservative, external force is 0. वरना क्या होगा? वरना ये होगा आपका फॉर्मूला, वरना ये फॉर्मूला. Yes, very good. Now if that is a case, then here is a small homework question. Okay, Danagari students, take the homework question and go. This is a homework question. The homework question says, see, I have a ball which is, okay, just a second. I have a ball. Okay, this is a ball of mass m and it is kept at a height h. Okay. Now I'm allowing it to drop on a surface. Okay, I will drop on the surface. I will drop this ball. Drop the ball on the surface. Now the ball will come over here. Now you need to find what is the final velocity. Okay, you need to find what is the final velocity. Find what? Final velocity. Is it good? You need to find. So initial velocity will be 0. You need to find what is the final velocity after dropping. Is it good, students? This is an homework. This is very simple homework. Okay. If that is the case, that's all for today, students. So coming to summary, initially we talked about what? JEE examination. I gave you the examination pattern, all the things. Yes. And next, what did we talk about? We solved a numericals based on what? Equilibrium. Numericals based on equilibrium. Then we solved what? The conservation of energy. Conservation of energy. Yes or no? Conservation of energy. Where we saw two formulas. Yes or no? We saw two formulas. Yes or no, students? One with what? External force, and what? With the non-conservative force, and one when external force is 0 and the non-conservative force is 0. Yes or no? These are the two equations that we got. Yes, good students. That's all for today. Yes. In tomorrow's class, we'll solve problems. YouTube Live students, thank you for attending today's class. If you have any doubt, you can still stay in the class and ask for doubt. Okay. And also, please, okay, I'm going to the starting of the this thing. What was this? Yes, I'll go to starting of the session. What was it? Okay. Here, yes. Here is the Telegram link, and the notes will be uploaded in the drive. Okay. Anjali, okay, I'll repeat the homework. Just a second. So the homework is, where is the homework? Okay, homework is here. The homework says there is a ball of mass m. Okay. Now above from the height h, I am dropping this. Okay, I'm dropping the ball. Okay, I'm dropping the ball. Now the initial velocity is 0. I want to find the final velocity after dropping. After dropping, final velocity क्या होगा? ठीक है? Chitraduga students, very good. Okay. YouTube Live students, take care. Bye bye. See ya. We'll meet in the next class. Till then, please what? Keep loving physics. Keep what? Keep studying physics. Okay. Take care. Bye bye.